Good evening to all. I hope I'm audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Am I audible to you? If yes, please write yes in the comment box. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If yes, please write yes in the comment box so that I can start. Good evening to all. I hope I am audible to you. Let me know so that I can start. Right? So today we are going to see next chapter, next points from your general pharmacology. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Everybody join fast. Good evening to all. I hope I am audible to you. Yes. Okay. Yes. Saroj Naik. Yes. So today we will see the remaining points from your pharmacology. So just a minute. So we have started with the pharmacology and we have seen absorption distribution, right? We have seen the general pharmacology. After that we have seen the kinetics, that is a absorption, distribution, metabolism. Okay, absorption and distribution we have seen. In the yesterday session we have seen this, right? So today we will see the remaining part. We have seen the plasma protein binding. In the previous session we have seen the distribution chapter. So very important, distribution. So whatever we have seen, so these synonyms and all that, they are important, right? So today we will see the next part, that is a route of drug administration. Route of drug administration, right? Route of drug administration. Again है ना, आपको लगेगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है क्या जीपैट में? डेफिनेटली आता है. So route of administration is also important, and on this part also they used to ask questions, right? So this is a very simple part, you might have seen in the semester exam, route of drug administration. So basically route of drug administration, they are classified into three types. Route of drug administration, they are classified into three types. First one is nothing but the enteral route. Enteral route or also known as the oral route. Enteral route. So enteral route means what? So it is a route of drug administration which involves the intestine. Okay, intestine का involvement अगर है तो उसको बोलेंगे enteral route of administration. If there is involvement of intestine, it is known as the enteral route. So enteral मतलब enteron. It is coming from the term enteron. Enteral. So first route of drug administration is nothing but the enteral route. Enteral route. So here there is involvement of intestine. यहाँ पे intestine involve कैसे तो भी, right? So in the enteral route, and second major class is a parenteral route or second. Okay. Parenteral route. So para-enteral. So you can see the para and enteral. Para means other than, and enteral means intestine. So parenteral मतलब क्या होता है? Para-enteral मतलब other than intestine. So okay.
So enteral route, parenteral route, and third one is a topical or local route. थर्ड होता है टॉपिकल और लोकल रूट. So these are the three major categories of route of drug administration. So in the oral route of administration you have, in the enteral route, in the enteral route of administration you have oral route. So enteral में आता है पहला oral route. Oral route is also known as a PO. P.O. P.O. मतलब क्या? Per oral. So oral route of drug administration. Then rectal route. Okay, देखो orally आप जो tablet लेते हो that will go into whatever dosage form you are taking orally, that will go into the stomach, intestine. Okay, so that's why enteral route. Then rectal route. So whatever tablets है ना, whatever tablet or dosage form. Say for example आपका rectal से क्या जाता है? आपका rectal से आपका इनिमा जाता है. rectal से इनिमा is administered by rectal route. Then suppositories are administered by rectal route. Suppositories. And then your rectal tablets. So through a rectum rectal tablets are administered. Through a rectum your enema is used. Through a rectum suppositories are used. Okay, so we'll see in the detail rectal route. So rectal route is a kind of enteral route. Next आता है आपका subluminal route. Next आता है subluminal route. So subluminal route, so administration of drug, subluminal route means you have to place a drug below the tongue. Okay? Subluminal route मतलब you have to place the tablet below the tongue. आपके टंग के नीचे आपको टैबलेट रखना है. क्यों? Because right from the capillary network below your tongue. So from that drug will directly go into systemic circulation. Right? Some part may go into the intestine, that's why enteral. And last one is a buccal. So buccal. Okay, buccal means you have to place a tablet in a buccal pouch. Buccal pouch means a pouch made from a cheeks and teeth. Cheeks and teeth. So enteral route. In the enteral route you have oral route. In the enteral you have oral route, then you have rectal route, then you have subluminal route, then you have buccal route. So we will discuss it one by one, don't worry. Now in the parenteral मतलब para-enteral, para मतलब other than, enteral मतलब intestine. So other than intestine, so you have injections over here. So different type of injections, right? So in this intravenous route is there, then intramuscular route is there, then subcutaneous route is there, then intradermal route is there, then intra-arterial. Okay, intra-arterial means injection is directly given to the artery, है ना. In case for example जैसे cardiac है ना, cardiac arrest होता है, so in that adrenaline is directly injected into the artery, है ना. So intra-arterial. Intrathecal means you have to inject into the subarachnoid space between the, है ना, in the spinal cord. So intrathecal, right? Intravenous मतलब you have to inject drug directly into the vein. Intramuscular in the muscles. Subcutaneous मतलब below the skin, and intradermal means in the layers of skin. Intra-arterial means in the artery directly. Intrathecal means you have to inject the drug into the subarachnoid space between spinal cord, right? Then topical route. So in that local application topically. For say for example for protective nature, is up ointment, creams, antibacterial creams used to apply for locally. Then local to a deep tissue. So it is applied at deep. So drug will go into the deeper tissue. Then local to the joints. Then again एक और होता है other. So in that inhalation route is there and there is a nasal route. So inhalation route and nasal route. Basically यहाँ पे देखो route of drug administration, they are classified majorly in a two category.
ये सभी रूट का मोस्टली दो कैटेगरी होता है, एक होता है नॉन सिस्टमिक एंड एक होता है सिस्टमिक. ऑल दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू आइदर सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक. सिस्टमिक में मतलब क्या होता है? सिस्टमिक मींस योर ड्रग, ओके, ड्रग आफ्टर एब्सॉर्प्शन विल गो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. So drug after the absorption from the site of administration, it goes into systemic circulation known as the systemic route of administration. Non-systemic means, so from this route of administration drug will not get absorbed into the blood, है ना. So systemic में आता है आपका, है ना, in the systemic you have enteral route, you have parenteral route, you have other, and in the local you have local application, then local to the deeper tissue and then local to the joints. ठीक है. So per oral मतलब orally you have to take whatever dosage form like tablet, cachet or powder. आप orally लेते हो तो oral dosage form. Some dosage forms are designed to give rectally. जैसे आपका suppository होता है, enema होता है and rectal tablets. They are given by rectal route. Okay. Sublingual you have to place the tablet below the tongue, right? Whatever capillary network is there below your tongue, from that part drug will be absorbed. Buccal means you have to keep a tablet in a buccal pouch which is made from the space between teeth and cheek. आपके दांत और चिक्स के बीच में जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं बक्कल पाउच, राइट. सो रिमेंबर बाय यूजिंग दिस टू रूट, अगर ये सबल्यूमिनल रूट है ना, सो बाय यूजिंग सबल्यूमिनल रूट most of the drugs directly go into the blood because whatever capillary network is present below the tongue, so that capillary network will absorb drug directly into the systemic circulation, and that's why remember sublingual route bypasses the first pass effect. Sublingual route bypasses the first pass effect. यहाँ पे नहीं मिलेगा. बाद में ये सब इंजेक्टेबल रूट्स हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस, इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राथिकल. अदर में आता है इनहेलेशन. इनहेलेशन में वट एवर यू आर इनहेलिंग सो दैट विल गो इनटू लंग्स एंड लंग में से ये आपका ब्लड में जाएगा. सो इनहेलेशन रूट इज ऑल्सो सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये अदर रूट, राइट. सी इट वन बाय वन, राइट. अगेन ये सेम थिंग यहाँ पे है ना, लोकल रूट. सो द मेन एम ऑफ लोकल रूट इज टू see or to retain the drug to a limited area, to confine the drug to a limited area, right. तो इसमें locally application to the mucous membrane, for example mouth wash आता है, surfacely for example ointment, creams, deeper tissue intra-articular joints में inhalation है ना, bronchodilator. then systemic route of inhalation भी systemic route of होता है, but in a inhalation route so it may act as a systemic as well as local, है ना, because if drug is being absorbed in a systemic circulation it will act as systemic. और अगर आपको सिर्फ लोकली ब्रोंकोडाइलेटर लेना है तो लोकल, सो इनहेलेशन रूट आर इट विल एक्ट एज अ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक, राइट. सिस्टमिक में आता है आपका बक्कल, ओरल, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, बक्कल रूट, देन रेक्टल रूट, ओरल रूट, बक्कल रूट, रेक्टल रूट, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राआर्टेरियल एंड सबक्यूटेनस. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग सबक्यूटेनस रूट मोस्टली इंसुलिन इज टेकन इन अ डायबिटीज. इंसुलिन इज टेकन बाय सबक्यूटेनस रूट, है ना, स्किन के नीचे इंजेक्शन देना है. तो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो एब्डोमिनल एरिया जो होता है, एब्डोमिनल एरिया, तो एब्डोमिनल सबक्यूटेनस टिश्यू, तो दे यूज्ड टू टेक इंजेक्शन इन एब्डोमेन, राइट. देन इंट्राआर्टेरियल नियोस्टिकमिन, ओके, और अदर ड्रग्स. इंट्रावेनस से इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, इंट्रामस्कुलर से स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर कोई भी इंजेक्शन देते हैं. रेक्टल से फॉर एग्जांपल इनिमा सपोजिटरी एंड रेक्टल टैबलेट्स. सो बक्कल ग्लिसरॉल, नाइट्रोग्लिसरीन. सो बक्कल और सबलिंगुलर से भी देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, राइट. सो विल सी वन बाय वन, ओके. सो व्हाट एवर टैबलेट यू आर टेकिंग, ओके, सो you are taking a tablet, say for example tablet, if you place your tablet below the tongue, अगर आपने टैबलेट जो है टंग के नीचे रखा है, so below your tongue there is a network of capillary. आपके टंग के नीचे कैपिलरी का नेटवर्क होता है, and that from that network if drug is a lipid soluble depending on the physicochemical properties of drug, if drug is a lipid soluble so that drug is directly absorbed from your from the capillaries below the tongue
directly the drug will go into the systemic circulation. तो सबलिंगुलर रूट से डायरेक्टली ड्रग कहाँ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है. एंड इट आल्सो हैज अ ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट, तो फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है ये रूट का. एंड दैट्स व्हाई दिस रूट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द नाइट्रोग्लिसरीन इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. जो एंजाइनल पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसमें ये नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट वहाँ पे सबलिंगुलर से ज़्यादा दिया जाता है. राइट. देन अगेन दिस रूट इज आल्सो यूज्ड फॉर द एंटी-इमेटिक ड्रग्स like your chlorpromazine, like trifluoperazine, etc. Right. So sublingual route again bypasses the first pass effect. देखो sublingual route, तो sublingular route से क्या है कि भाई आप यहाँ पे टैबलेट कहाँ पे ले रहे हो, just below the tongue. You are taking tablet, just you are placing tablet just below the tongue. Now whatever capillary network is there, whatever capillary network is there below your tongue, यहाँ पे देखो ये सब capillary network है. So drug is directly absorbed from this and sent to your artery. That is the systemic circulation. Drug is directly going to the systemic circulation, है ना, right? So again by nasal route, है ना, nasal route जो intranasal spray. So whatever you are inhaling, that will directly go into the lungs. It will directly go into the lungs, and from lungs it will directly go to the heart. It will directly go to the heart because lungs में जितना भी एब्सॉर्प्शन होता है ड्रग का, वो सब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. एंड दैट्स व्हाई इनहेलेशन रूट इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट कार्डियक टॉक्सिटी. अगर आपका ड्रग इनहेलेशन रूट से दिया आपने, कभी कभी आपको कार्डियक टॉक्सिटी हो सकता है, बिकॉज यू आर प्लेसिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. ये आपको आएगा बाद में. तो नेक्स्ट वन इज, सपोज आपने टैबलेट ओरली ले लिया, सपोज यू हैव इंजेस्टेड ए टैबलेट, इंजेस्ट किया तो यहाँ से अंदर जाएगा, इट विल गो टू ए स्टमक. सो इट विल ब्रेक डाउन टैबलेट, स्टमक, इन द स्टमक टैबलेट विल बी ब्रोकन डाउन, देन देयर इज रिलीज ऑफ टैबलेट, देन एक्टिव ड्रग विल बी स्टार्ट एब्सॉर्बिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन एरिया. तो it is a stomach, and stomach offers a very limited surface area for absorption. Only acidic drugs they are absorbed from the stomach. उन्हें देखा ही है. Okay, then it will go to intestine. Intestine से यहाँ पे बहुत सारा ड्रग absorb होगा. But whatever your GIT is there, GIT का जितना एरिया है आप देखो यहाँ पे, this is the area of your GIT, right? From the GIT, the blood is carried to a liver. From the GIT, this blood is carried to a liver. यहाँ से जो absorb होगा वो liver को जाएगा. लिवर में क्या होगा, some part of drug will be metabolized. So that's why oral route of drug administration is related with the first pass effect. तो oral जो route है उससे first pass effect मिलता है आपको, and that's why oral route is mostly prone to the first pass effect. फर्स्ट पास effect नहीं, जहाँ से जो ड्रग्स एब्सॉर्ब हो गए वो लिवर में जाएगा. Depending upon the physical chemical properties of drug, some part of drug will be metabolized before reaching to a systemic circulation. और लिवर से बाद में ये जाएगा क्योंकि ये क्या है, पोर्टल वेन है. दिस इज नोन एज अ पोर्टल वेन. दिस इज नोन एज अ पोर्टल वेन. मोस्ट ऑफ द absorption taking place from your GIT area, that is carried to a portal vein, that will carry to a liver, and some part of drug will be metabolized over here, known as a first pass effect or first pass metabolism, before reaching to a systemic circulation. Right. अभी देखो सबलिंगुलर रूट से जब आप ड्रग देते हो, that will directly go into the systemic circulation. So that's why sublingual route of drug administration is devoid of first pass effect. मतलब यहाँ पे first pass effect is bypassed. क्वेश्चन आता है आपको, first pass effect can be bypassed by. So first pass effect can be bypassed by sublingual route. Sublingual route से first pass effect bypass होता है. Are you getting? समझ रहा है आपको? Then again one more route is there where you can bypass the first pass effect. Through sublingual route you can bypass the first pass effect. Through intranasal route you can bypass the first pass effect. अब देखो यहाँ पे इंट्रानजल स्प्रे. So whatever you are taking by nasal route, inhalation route, nasal route, inhalation route, so that will also go directly into the systemic circulation. ये lungs में जाएगा. lungs में क्या, कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा. राइट.
So that's why sublingual route and intranasal route, also some part of rectal route, so you can bypass the first pacific, ठीक है. बट इफ यू टेक ओरली, अगर आपने टैबलेट ओरली ले लिया तो ओरली कहाँ पे जाएगा टैबलेट? स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें से ब्लड जाएगा लिवर में मेटाबोलाइज होगा थोड़ा पार्ट, या फिर बहुत सारा ड्रग मेटाबोलाइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट पासिफिक, राइट. नाउ नेक्स्ट है आपका रेक्टल रूट. नेक्स्ट है आपका रेक्टल रूट. So you can see rectum. This part is known as a rectum. This part is known as a rectum, and rectal route of administration. देखो, so most of the blood from GIT, यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिखला है, that is known as a veins. So most of the blood from GIT area, जैसे stomach area, intestine area, large intestine area. So most of the blood collected from your GIT area that will be carried to a liver, and here is a metabolism order. But if you come to a rectum, अगर rectum के तरफ जाएंगे आप, तो rectum में क्या है देखो, rectum is supplied with your 2 blood vessels. Rectum is supplied with the 2 blood vessels. तो आपका ये जो rectum part है, so that is supplied with the 2 blood vessels. This is known as a this one is known as a, you know, inferior hemorrhoidal vein, and this one is known as a superior hemorrhoidal vein, है ना. superior hemorrhoidal vein, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पे मैं I लिखता हूँ. superior hemorrhoidal vein मतलब ऊपर वाला, and inferior hemorrhoidal vein मतलब नीचे वाला. Suppose if you place a tablet, और a कैप्सूल ओवर हेयर, अगर आपने कुछ टैबलेट कैप्सूल प्लेस किया रेक्टम में, suppose you have placed a tablet or a capsule or suppository in the rectum, so what happen? So if you place a suppository tablet near to the inferior hemorrhoidal vein, अगर आपने टैबलेट या फिर suppository near to the inferior hemorrhoidal vein, है ना. Suppose you have placed a suppository or tablet near to the inferior hemorrhoidal vein, so it will get dissolved and drug will be absorbed into inferior hemorrhoidal vein, and that is carried directly into systemic circulation, right. So that's why 50% of drug that can be bypassed, 50% of bypass effect can be prevented. But suppose आपने अगर tablet suppository, अगर आपने if you place a suppository near to this part, तो यहाँ पे आपने place किया, तो this part will carry blood to a superior hemorrhoidal vein, will carry blood to a liver, right. So it depends on your placement. आपने drug place कहाँ किया. If you place a suppository to the inferior hemorrhoidal vein, near to the inferior hemorrhoidal vein, so it will go directly into the systemic circulation. But if you place a tablet near to the superior hemorrhoidal vein की तरफ अगर आपने ज़्यादा प्लेस किया है, that will carry blood to a liver, and यहाँ पे first pass effect हो जाएगा, first pass effect, right. So that's why 50% drug can be prevented from first pass effect by rectal route. Okay, so यहाँ पे देखो 50% subjected to a first pass metabolism. Why? Because whatever drug that is absorbed through a superior hemorrhoidal vein, that will carry to a liver, right, and that will metabolize. But whatever amount of drug that is absorbed by inferior hemorrhoidal vein, so that will be prevented. Okay, so that's why. Then again आपका injections, so intravenous injection, so you are directly injecting a drug into vein, that will carry to a directly systemic circulation, so no first pass effect and 100% bioavailability. If you inject drug into intramuscular, so drug will also get absorbed from the blood, directly go into systemic circulation. Transdermal patch also. Okay. So it is just overview of your drug administration, route of drug administration. We will see individual route of administration now.
Now first is a different route of drug administration. First one is a oral route or enteral route. पहला क्या है, oral route और enteral route. Oral route or enteral route. So in this you are taking a tablet through oral route that will go into your stomach. It will break, it will disintegrate, and that will be absorbed from your stomach, right? तो यहाँ पे देखो oral और enteral route. So first oral route advantages, disadvantages you may read from your book. Advantages, disadvantages are not required for GPAT, ठीक है, बट यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है GPAT के लिए वो देखो, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू अंडर, यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली. आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली. साउंड आ रहा है प्रॉपरली आपको? इफ यू आर गेटिंग साउंड प्लीज राइट यस. सो डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. पहला है ओरल रूट और इंटरनल रूट, ठीक है. ओरल रूट, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट? कि बाबा ये सेफ है, इट इज वेरी सेफ, एनीबडी कैन टेक टैबलेट. सबको खाना खाना आता है, राइट? सबको खाना सबको मालूम है. देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू ए पेशेंट, पेशेंट कैन टेक, ओके, एंड इट इज इकोनॉमिकल. सो इट इज सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, ओके. देन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस ओरल रूट क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी टार्डी. ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी मतलब क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन it is a required, it will require time to show the pharmacological effect. Onset of action is tardy and it will require at least 45 minutes to show the action. So onset of action is tardy. And then whatever digestive juice आपके GIT में, स्टमक में, आपका स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, आपके इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे. तो स्टमक में आपका एसिड होता है. सम ड्रग आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस. तो कुछ ड्रग क्या है आपके डाइजेस्टिव जूस, जैसे HCl में या फिर इंटेस्टाइन के जूस में, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं. सो ओके. देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट पास इफेक्ट. यहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट भी क्या होगा, आ जाएगा. सो फर्स्ट पास इफेक्ट इज शोन बाय ओरल रूट. सो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट क्या है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी लेट और इट इज टार्डी. देन ड्रग कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द GIT जूस. जैसे आपका एसिड है, तो most of the proteins, most of the hormones, most of the vitamins, most of the esters, they are destroyed in this GIT juice, ठीक है. तो ईस्टर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स है, कुछ हार्मोन्स है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं. जैसे इंसुलिन है, डोपामाइन है. डोपामाइन अगर आपने ओरल दे तो GIT में ही खलास हो जाए, ठीक है. सो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड. नाउ टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग इन द योर स्टमक. So entry coating of tablet is done. Entry coating or film coating of tablet is done to prevent the destruction of drug in the stomach. So acid है ना, those who are sensitive to acid, तो acid के लिए जो acid में destroy होते हैं वो drug के लिए आपको क्या करना है, entry coating. So entry coating is done to prevent the destruction of drug from है ना gastric juice, right? Okay. Then नेक्स्ट होता है आपको पेरेंट्रल रूट. पेरेंट्रल रूट्स में क्या आता है, देखो इनहेलेशन. पेरेंट्रल रूट में आता है पहला इनहेलेशन. तो इनहेलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है इनहेलेशन से. तो इन द इनहेलेशन रूट मोस्टली ब्रोंकोडायलेटर ड्रग यूज्ड इन द अस्थमा एंड सम कैल्सिटोनिन वगैरह, दे आर गिवन बाय इनहेलेशन रूट, राइट. तो व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट? इनहेलेशन रूट, तो ड्रग इज एब्सॉर्ब क्विकली, है ना. ड्रग इज एब्सॉर्ब क्विकली. आपका जो ड्रग है दैट विल बी एब्सॉर्ब क्विकली टू प्रोड्यूस अ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट. तो वट एवर ड्रग यू आर गिविंग बाय इनहेलेशन रूट दैट विल गिव यू सिस्टमिक एज वेल एज लोकल इफेक्ट. देखो अगर आपने इनहेलेशन किया, जैसे लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक दे आर गिवन बाय इनहेलेशन, सॉरी जनरल एनेस्थेटिक्स दे आर गिवन बाय इनहेलेशन रूट. तो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो होते हैं, जैसे गैसियस जनरल एनेस्थेटिक्स, क्लोरोफॉर्म, ईथर, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड. सो गैसियस जनरल एनेस्थेटिक्स दे आर गिवन बाय इनहेलेशन रूट फॉर द सिस्टमिक इफेक्ट, राइट. सो ब्रोंकोडायलेटर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अस्थमा है आपको, तो आप पंप यूज करते हो, सो दैट इज गिवन आल्सो बाय इनहेलेशन रूट, बट दैट विल एक्ट लोकली टू डायलेट द ब्रोंकाई. आपका जो अस्थमा में ब्रोंकस जो कंस्ट्रिक्ट होगा है उसको डायलेट करने के लिए, राइट. तो वहाँ पे वो, so absorption is quickly to produce a systemic as well as local effect. So disadvantage क्या है इसका? disadvantage, most important disadvantage है, it may produce
कार्डियक टॉक्सिटी क्या है? इट मे प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिटी. क्वेश्चन में आस्क, they can ask you question like this, which route of drug administration is mostly prone to the cardiac toxicity. कौन से ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि जिससे कार्डियक टॉक्सिटी हो सकता है? कौन सा है भाई? इनहेलेशन. क्यों है? सो इट मे, राइट, इट मे प्रोड्यूस अ कार्डियक टॉक्सिटी. इट मे प्रोड्यूस अ कार्डियक टॉक्सिटी. व्हाई? बिकॉज वट एवर यू आर इनहेलिंग, जो आप इनहेल कर रहे हो तो लंग्स में जाएगा, लंग में से एब्सॉर्ब होके वो ब्लड कहाँ पे जाता है ना, है ना. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो है ना, है ना, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल गो टू द लंग्स. देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दैट ब्लड विल कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. सो व्हाट एवर यू आर इनहेलिंग, आप जो भी इनहेल कर रहे हो वो कहाँ पे जा रहा है? फिर लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. सो ड्रग इज डायरेक्टली गोइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट थ्रू ए पल्मोनरी वेन्स, एंड दैट्स व्हाई the inhalation route is mostly prone to the cardiac toxicity. Inhalation route is mostly prone to the cardiac toxicity. याद रखना है आपको. Then mostly anesthetic drugs, है ना, general anesthetic drugs they are given by inhalation route. Then anti-emetic drugs are given by inhalation route, right? Bronchodilators they are also given by inhalation route. ठीक है, तो ये oral route हो गया. ये वैसे तो ये इनहेल ही कर रहे हैं, ये inhalation route होगा. ठीक है. Next one is nothing but the injection route. So first injection is the intradermal. Intradermal मतलब क्या? What do you mean by intradermal? So injection is given in the layers of skin. In the layers of skin. In the layers of skin. So injection is given in the layers of skin. In the layers of skin. So intradermal in the layer of skin. So given in the layers of skin and only small quantity of injection that can be given. तो स्किन का लेयर कितना है? छोटा है, उसमें कितना इंजेक्शन बैठेगा? ओके. सो ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट कैन बी इंजेक्टेड. कितना है भाई? क्वेश्चन आ चुका है. तो ओनली 0.5 ml ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी इंजेक्टेड इनटू द स्किन. ओके. सो इन द लेयर्स ऑफ स्किन यू कैन इंजेक्ट ओनली 0.5 ml, है ना, एंड इट इज यूज्ड टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स. एग्जाम्पल बीसीजी वैक्सीन. तो बीसीजी वैक्सीन या फिर आपको अगर पेनिसिलिन का एलर्जी है या नहीं है वो चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे, आपका जो स्किन है उसमें 0.5 ml का पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे. तो आपको बोलेंगे वेट करो फॉर 24 आवर्स. अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है तो दैट मीन्स यू आर नॉट सेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन. तो डॉक्टर विल चेक योर सेंसिटिविटी फॉर एंटीबायोटिक बाय इंजेक्टिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इनटू ए लेयर्स ऑफ स्किन. If there is any edema, if there is any inflammation, then he will not use that, है ना. पेनिसिलिन का इंजेक्शन देके चेक करेगा कि यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी है या फिर हाइपर सेंसिटिव है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर यूज़ करेगा, हो रहा है तो फिर नहीं यूज़ करेगा. तो इट इज़ यूज टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ वैक्सीन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया. बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय. नेक्स्ट आता है आपका सबक्यूटेनियस रूट. सबक्यूटेनियस रूट. सबक्यूटेनियस मतलब क्या है? बिलो द स्किन, इन द क्यूटेनियस टिश्यू, है ना. गिवन बिलो द स्किन ओनली नॉन इरिटेंट टाइप ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी इंजेक्टेड. कौन से? नॉन इरिटेंट ड्रग जो इरिटेट नहीं करेंगे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन? इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, क्वेश्चन आ चुका है. 2 ml मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी इंजेक्टेड बाय सबक्यूटेनियस रूट. इट इज अ 2 ml. मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है इसका? 2 ml. मैक्सिमम 2 ml आप सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट कर सकते हो. कॉमन रूट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन. क्वेश्चन आ चुका है. वेरी वेरी कॉमन रूट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन. ठीक है. सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर द डेपोट प्रिपरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन्स. तो डेपोट प्रिपरेशन मतलब क्या है? एक डेपोट प्रिपरेशन होता है, टैबलेट होता है, स्लोली रिलीज होता है. एक बार आपको सबक्यूटेनियस मतलब एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ता है. दे विल make a small surgery, they will give you cut and below that skin they will place that preparation or implant, and that implant will release a drug for 6 months or 1 year, etc., etc., known as a steroid hormones depot preparation, right? So intradermal injection, subcutaneous injection. Now next आता है intramuscular injection. Next आता है
मस्कुलर इंजरी. I hope I am audible to you and you are able to see the screen. आपको स्क्रीन दिख रहा है, आपको साउंड आ रहा है. नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. तो इंट्रामस्कुलर मतलब क्या? यू हैव टू इंजेक्ट ए ड्रग प्रिपरेशन इनटू द मसल. तो कौन सा मसल? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल. सो व्हाट टाइप ऑफ ड्रग दैट कैन बी इंजेक्टेड? यहाँ पे माइल्ड इरिटेंट, थोड़ा डिस्कनेक्टेड.